अब हम करते हैं दूसरी बुक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी और हम अल्कोहलिज्म का चैप्टर कर रहे हैं अभी दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ एनीथिंग व्हिच हैज बिकम अ नेगेटिव हैबिट बेसिकली अल्कोहलिज्म इज अ नेगेटिव हैबिट बिकॉज वो इंसान को कभी ग्रो नहीं होने देता है किसी भी मायने में फिजिकली मेंटली इमोशनली and it's a big block in every area of your life. Money will not come, health will not come easily, relationships will not come easily, and it's a weak makes us weak mentality person. So but then उस पे effort करके नहीं करना पड़ता है मैं आज से I will stop having alcohol, it doesn't work, you will go back to alcohol. तो वही हम अभी तक पढ़ रहे हैं. So we'll continue reading. Yes, Mohit ji, good morning to you. Of course, as you know, people will give you all manner of excuses or alibis as to why they drink. They may blame their drinking or some tragedy in the home, some crisis in their life, lack of money or education. The real reason is negative thinking, which has brought about an emotional maladjustment. As a man thinketh, is it in his heart, so is he. The word heart is an ancient word meaning the subconscious mind. In simple language, it is saying, as you think and feel, so are you in all departments of your life. Emerson said, a man is what he thinks all day long. This is the answer and the whole story. The cause is in yourself, in your habitual thinking, your mental attitude and reaction to life. The alcoholic addict is really seeking to escape some sense of bondage or some subconscious restriction. In other words, the alcoholic lacks confidence and poise. I told a woman one time not to give any more money to her son as he spent it all on drink. I said, you are only contributing to his delinquency. Oh, she said. He kneels down, kisses the Bible, and swears he will never touch another drop. I believe him, then I give him the money. He seems so penitent, remorseful, and so full of condemnation of himself for the way he acted, and that I think he means it. I explained to her that these were idle statements on the part of her son and really meant nothing. Under no circumstances should she give him any more money. I spent some time with her explaining that the boy had no free will but was just boasting about his willpower to give up drinking. His statements and oaths that he would never touch it anywhere were meaningless, as he had no power to back them up. In other words, he did not know where the power was, nor how to locate it. She brought him to see me. He came rather reluctantly, making the statement that he was not an alcoholic. I told him to stop this nonsense, admit it openly, and not dodge it. That is the first step in healing. Many remain alcoholics because they refuse to admit they are. This boy was condemning himself, saying, I suppose I am no good. Alcohol took him into a world of temporary illusion, where in this morbid imagination he was king for a day. This gave him a false sense of confidence and a temporary sense of self sufficiency. He admitted that if he took one drink, he lost all control and drank until he fell unconscious. The reason for this is obvious. His mental control was rendered null and void due to a subconscious pattern engraved on his mind over a long period of time. It is like a track on which the train moves. He had established a mental track in his mind on which ran images of drinking bouts, of glasses filled, images associated with feeling of enjoyment and success. The minute this confirmed drunkard took a drink, that was suggestion for another and another until he fell unconscious. He had subjectified a belief in the necessity of alcohol, the law of the subconscious being that of compulsion. The moment he took one, he was compelled to take another. This young man said,
What all alcoholics say: if I don't take the first drink, I am all right, but the minute I take the first, I lose control. The reason is that the one drink brings an outcropping of the subconscious mind, which in the case of the alcoholic, due to long habit and conditioning, says to him, have another, have another. His subconscious belief and fear is his governor and controls his conduct and actions. Man is bound by his beliefs, opinions, training, and environmental influences. He is conditioned to react the way he does. Life is forever seeking to express itself through man. The desire for true place, peace of mind, abundance, and security are cosmic urges within all men. There is a law of mind which, when understood, enables him to realize his cherished desires. The cause of all confusion, strife, and problems in the world is man's failure to realize his heart's desires. Show man the power of his own subconscious mind. Tell that if he will imagine the end, feel it subjectively, and remain faithful to his ideal, the subconscious will bring it to pass. People who try and stifle desire have really an unconscious impulse towards self destruction or self oblivion. When man begins to believe in a power greater than himself, lodged in his own unconscious depths, he is on the way to health, happiness, and peace of mind. There is nothing new about the following technique. It is as old as man. The most ancient wisdom available said, as a man imagines and feels, so is he. The first step: get still, quiet the wheels of the mind, enter into a sleepy, drowsy state. In this relaxed, peaceful, receptive state, you are preparing for the second step. The second step: take a brief phrase which can readily be graven on the memory and repeat it over and over again as a lullaby. Nancy's school technique: use the phrase sobriety and peace of mind are mine now, and I give thanks. To prevent the mind from wandering, repeat it aloud or sketch its pronunciation with lips and tongue as you say it mentally. This helps its entry into the subconscious mind. Do this for 5 minutes or more. You will find a deep emotional response from the subconscious. It is wonderful. The third step: just before going to sleep, practice what Goethe used to do. Imagine a friend, a loved one in front of you. Your eyes are closed, you are relaxed and at peace. The loved one is subjectively present and is saying to you, congratulations. You see the smile, you hear the voice, you touch the hand and the face. It's all so real and vivid. The word congratulations implies complete freedom. Hear it over and over again, and you get the reaction which satisfies. I think we'll read only so much. Thank you, Mohit ji, for reading. Such Thank you. important content it was. Thank you for reading so beautifully. So here we see where Dr. Joseph Murphy's explained that अगर किसी को कोई भी नेगेटिव चीज अगर हटानी है तो उसका उन्होंने तरीका पहले उन्होंने बताया that alcoholic will always look for a reason, you know, उसको validation अपने आप को देना पड़ता है because there's so much of guilt and shame inside. It is a practice of guilt and shame. There's a lot of guilt and shame inside. They are not able to look into the mirror in their eyes and say I love you. You know, it's very very difficult because they are ashamed of themselves. You know, उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं होता. सो हियर डॉक्टर जोसेफ मर्फी सेइंग दैट दे विल लुक फॉर रीजंस कि ओ उसने मुझे ऐसे कह दिया, पैसे की प्रॉब्लम है इसलिए पीना है, ये रीजन है इसलिए पीना है, ऑलवेज गिविंग देमसेल्व्स सम गुड रीजन, यू नो, दैट जस्ट टू वैलिडेट दैट लुक दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई आई एम ड्रिंकिंग. So, but then he says that this is just a case of like mentally being very, very weak. But then उन्होंने बाद में बहुत अच्छे से समझाया है that अगर अब जैसे वो वुमेन के बारे में बताया था कि उसका बेटा बहुत ड्रिंक करता था
तो दैट वुमेन वुड गिव अ मनी एंड ही वुड ऑलवेज से दैट यू गिव मी मनी, आई विल नॉट ड्रिंक, और वो बाइबल के ऊपर हाथ रख के ही वुड एक्चुअली स्वेयर दैट नो नो, आई एम नॉट इवन गोइंग टू टच अ ड्रॉप ऑफ दिस एंड you just give me money. She kept giving him, and then she told Dr. Joseph Murphy that every time when I give him money, he always touches the Bible and holds it, and he swears that he will never touch a drop. लेकिन वो दोबारा से पी लेता है. तो इस तरह से तो बट देन शी सेज लेटर कि नहीं नहीं वो बाइबल पे हाथ रखता है, आई थिंक आई हैव टू बिलीव हिम, यू नो, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, आई हैव टू बिलीव हिम. एंड उसके बाद देन यू नो लाइक जब ये अपने बेटे को लेके गई डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास, दैट वुमेन टुक द सन एंड वेंट टू डॉक्टर जोसेफ मर्फी. वहां पे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कहा कि मुझसे झूठ मत बोलो तुम कि तुम छोड़ दोगे और तुम्हारा मन नहीं करता. फिर उसने शेयर करना शुरू किया, बिकॉज ऑब्वियसली एक फसाड होती है ना, दैट नो नो आई विल नॉट टच अल्कोहल एट ऑल नाउ, एवरी टाइम जस्ट प्रॉमिसिंग दैट अननेसेसरली. So then Dr. Joseph Murphy ने कहा that it is okay, it is not easy for you to leave. फिर उन्होंने उसको subconscious mind के बारे में बताया, and then there were 3 steps that he gave. So ये 3 step के बारे में उन्होंने वो बताया है. So we'll just revisit those 3 steps. Anyone, और वो किसी भी addiction के लिए हो सकता है. It is not just. So first step we all know that mind को शांत करना होता है. Get into the alpha state of mind. The alpha state of mind is when we are absolutely, our brain waves have slowed down because कोई thought नहीं है दिमाग में, है ना. आंख बंद वैसे ही करते हैं. डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने हमको ये समझाया था that जैसे ही आपकी आईज बंद होती है 80% आपका माइंड वैसे ही स्टिल हो जाता है. Because eyes are catching 80% of our perception. I didn't know that. I came to know only when we read Dr. Joe Dispenza. सो 80% माइंड शट हो गया, आईज जब बंद हो जाती हैं, और उसके बाद बाकी की चीजें आपको थॉट्स में यू विल हैव टू कंट्रोल इट. लाइक डोंट लेट एनी, इवन इफ द थॉट कंट्रोल, एक्नॉलेज एंड लेट इट बी, यू नो, लाइक डोंट कोर्स, डोंट मेंटली ऐसे नहीं मुझे थॉट रोकना है रोकना है रोकना है, दैट विल नेवर लेट यू बी काम. So just focus on your inhalation and exhalation. That is what is the first. That means अब आपका माइंड रिसेप्टिव हो गया है, सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी अब आप बोलोगे. सेकेंड स्टेप में अब आप वो फ्रेज यूज करो, लाइक हमने अभी इसी चैप्टर में अबाउट 3-4 days ago we had learned that phrase. सोब्राइटी मतलब सोबर होना, सोबर रहना. Sobriety and peace of mind are mine now and I give thanks. So this lullaby की तरह, लोरी जैसे बच्चे को सुनाते हैं, वैसे अपने आप को रिपीट करते रहो. Sobriety and peace of mind are mine now. और स्लोली स्लोली बोलना है क्योंकि माइंड का स्लो ब्रेन वेव्स है, तो अगर बहुत फास्ट बोलेंगे तो वो एक्चुअली बीटा में जाने लग जाती है. तो धीरे धीरे बोलना है. Sobriety and peace of mind are mine now. And it is, उन्होंने स्पेशली ये बोला है that use your lips and tongue to speak it, क्योंकि उसकी वजह से इम्प्रिंट बहुत सॉलिड होगा. तो ये आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हो, ये जो 3 step प्रोसेस है ना. इवन इफ इट इज टू डू विथ मनी, इवन इफ इट इज दैट माइंड कम इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली एंड आई गिव थैंक्स फॉर इट. So this also you can say, you can also say that my health is getting better and better by the day and I give thanks for it. That thank you that I'm enjoying the best of health. Thank you so much that I'm enjoying the best of health. So you can just keep repeating this sentence or whatever it is that your challenge is. ओके तो उसको आप लगातार रिपीट करते रहो फॉर अबाउट 5 minutes और मोर, 5 or 10 minutes, एंड देन यू विल फील अ लिटिल बिट सेंस ऑफ पीस एंड काम इन योर सबकॉन्शियस माइंड. ठीक है. फिर थर्ड स्टेप ये है दैट आप किसी क्लोज वन को, जिनके साथ आप जनरली शेयर करते हो चीजें, उस पर्सन को इमेजिन करो, जो गेथे का मेथड है ना. इमेजिन करो कि वो आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं उसी चीज के बारे में, जो भी चीज है. सपोज आपका ये था दैट यू वांटेड मोर वेल्थ और यू वांटेड टू बाय अ हाउस, आपने सपोज उसका किया था. नाउ यू सी दैट यू नो समबडी जिसको आप बता सकते हो दैट आई हैव फाइनली बॉट अ हाउस इन दिस सिटी, और वो पर्सन आपको कंग्रेचुलेट कर रहा है किसी और को, और उसकी आवाज आप जानते हो, उसकी टोनालिटी आप जानते हो, किस टोन में वो आपसे बात करती है, करता है, जो भी है. And then you have to, that is the third step. Imagine, so eyes are still closed. Okay, but you're imagining the person who's close to you, जिसके साथ आप शेयर करते हो सारी बातें, वो आपको congratulations बोल रहा है अपनी आवाज में. तो इस तरह से you will see that you know like slowly, but ये repeat करना पड़ेगा because repetition बहुत mandatory aspect होता है reprogramming का. So mind में अगर कोई भी subconscious mind में कुछ भी reprogram करना है तो आपको वो
लगातार करना पड़ेगा। मतलब ये सुबह और रात को तो करना ही पड़ेगा। इन्होंने बोला है रात को सोने के पहले फिर से करो आप, मतलब रात को सोने के पहले ये वाला करो। ये जो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली जो प्रैक्टिस होती है, लेकिन आप हर बार भी कर सकते हो। जितनी बार करोगे उतनी बार ये धीरे धीरे करके बिलीवेबल होता जाएगा। एंड वी विल सी 21 डेज ऑनवर्ड्स ये इम्प्रिंट हो गया है। बट वो 21 दिन की जो जर्नी होती है ना, सबसे ज्यादा फॉल वहीं पे हो जाता है हमारा। बीच में हम लुढ़क जाते हैं, कहीं पे 2 दिन भूल जाते हैं, एक दिन नहीं करते, इस तरह से। तो चाहे आप दिन में 2 बार या 3 बार ना करो, दिन में एक बार तो करना मैंडेटरी होता है। So now the subconscious mind has got reprogrammed that sobriety and peace of mind are mine now, and I give thanks. So you will see the difference in evidence happening in your life. और ये वाली प्रैक्टिस आप किसी भी चीज के लिए, एज आई मेंशनड, आप यूज कर सकते हो। दैट हैविंग अ परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपको करना है, उसके लिए कर सकते हो। बीइंग एबल टू स्लीप ऑन टाइम, आप उसके लिए कर सकते हो। दैट जो लोग बोलते हैं आई लव स्वीट्स एंड आई हैव गॉट अ स्वीट टूथ, और जिसके कारण आपको लगता है कि योर हेल्थ इज नॉट दैट ग्रेट एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका वेट भी बढ़ रहा है, सपोज आपको ऐसा लग रहा है दैट मिठाइयाँ मुझसे कंट्रोल नहीं होती, आप उसके लिए कर सकते हो। झूठ बोलने की आदत है, उसके लिए ये कर सकते हैं। किसी भी चीज बिंज करने के लिए, सपोज लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, तो अपने आप को लगातार बोलते रहो दैट ऑल माय वर्क गेट्स डन बिफोर टाइम एंड आई लव इट एंड आई गिव थैंक्स फॉर इट, इस तरह से। सो यू विल सी दैट सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन और कंसिस्टेंसी के कारण रिप्रोग्राम होता है। अगेन द वर्ड कंसिस्टेंसी इज कमिंग हियर अगेन एंड अगेन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग बिना कंसिस्टेंसी के नहीं होती है। इसीलिए मैं आपको बार बार ओवर एम्फेसाइज करती हूँ इस वाले वर्ड पे, दैट कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज को लेके। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आप बहुत व्यस्त हो, बहुत सारे प्रैक्टिसेस आपसे नहीं की जा रही है, आप बस 5 प्रैक्टिस अपनी चूज कर लो, जिसमें से सुबह काउंट माई ब्लेसिंग्स, रात को मैजिक रॉक है, मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, और जो भी दिन का असाइनमेंट है। आप ये सिर्फ 5 प्रैक्टिस करो, लेकिन ये रोज करो। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए एक दिन भूल गए एक दिन नहीं। आप बेशक कम कर लो, लेकिन करना, कंसिस्टेंसी वर्क्स बेटर देन वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी। सो डू दैट एवरी डे एंड देन ओनली यू विल फील द डिफरेंस। है ना? अगर कंसिस्टेंटली आप ये, अगर बहुत पैसे का दिक्कत चल रहा है, तो आज जो हमने मैजिक मनी किया है, इसको करूँ कम से कम 21 दिन लगातार। रोंडा बॉय ने भी बोला है, हर टेक्स्ट में लिखा होता है। सो अंदर से सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे जब कोई चेंज आता है, तो उसको मिनिमम 21 दिन लगते हैं, 21 दिन लगातार करने के लिए। एक दिन भूल गए तो 21 दिन नहीं होगा। असाइनमेंट्स में भी तो यही है, राउंडअपन ने बोला है गो बैक 3 डेज। अगर आपका आज छूट जाता है तो आप 3 दिन पीछे जाओ। सो इस तरह से हमको करना होता है। सो कंसिस्टेंसी जरूरी होती है ये करने में। ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी सारी किताबों में बोला है दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डू इट एवरी डे, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। So hence that becomes important because subconscious mind ki reprogramming is a technique. It is not a some spiritual practice or something. It's a technique that we have to do. Like अगर आप सब्जी बना रहे हो, तो कैन यू ऐड सब्जी और फिर आप तेल डालो? ऐसा नहीं होता है ना। इन द पैन, वट एवर यू मेकिंग इट इन द स्किलेट, इन द पैन, आप पहले ऑयल डालोगे, उस ऑयल को गर्म करोगे, उसके अंदर फिर आप जो भी जीरा या राई का तड़का डालते हैं वो तब डालते हैं, है ना? उसका प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हम अपना जो भी सब्जी डालोगे, फिर उसमें नमक डालोगे, फिर बाकी का मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करके अब आप उसको ढक के रखोगे। सो ये प्रोसेस हुआ ना। सो यू कैन नॉट रिवर्स दिस, और यू कैन नॉट स्किप अ स्टेप कि ठीक है मैं तेल डालती ही नहीं हूँ, मैं सीधे आई विल पुट ऑल द एग प्लांट्स, बैंगन जो भी आप बना रहे हो, यू विल डायरेक्टली पुट इन द ड्राई तवा विदाउट डूइंग, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप यू पुट जीरा और राई। यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज दैट्स अगेंस्ट द प्रोसेस, दैट विल नॉट गिव यू द सेम आउटपुट। ओके, सो ये टेक्निक होती है हर चीज को सही तरीके से करने की। तो सही तरीके से करने की टेक्निक डॉक्टर जोसेफ मर्फी बता रहे हैं कि इसको लगातार हमको रोज करना पड़ेगा, दिन में 2 बार या 3 बार, कोई बात नहीं। किसी दिन आप 2 ही दिन किए, किसी दिन आपने 3 बार किया, किसी दिन आप एक ही बार कर पाए, बट एटलीस्ट यू हैव डन इट। दैट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी। 24 घंटे में मिनिमम एक बार करना जरूरी है, अगर आप दूसरी बार नहीं कर पाते हो तो। ठीक है, और रात में 1 सेकंड में, मतलब you don't, if you're not giving too much time to it, suppose in the night, not 5 minutes, but you are at least bringing that thought into your mind and then going to sleep after it, so that itself also will make a lot of difference. Okay, so this is all we have for today's session.
Anyone wants to share or add anything? Otherwise, we'll all log out since it's a work day. And thank you so much for everything. And thank you, Soumya, for posting the videos every day, and Anu for sharing the stories with me. I'll try and be more consistent with giving you, like regular videos. I am doing it. I am consistently doing it. Thank you so much. Thank you. Thank Bye. you, Thank you, ma'am. Thank you ma'am. so Thank you, much. Dipti, ma'am. Thank Love you, you. ma'am. Love you, ma'am.